The Secret of Emberfall. Emberfall का राज. In the quiet village of Emberfall, nestled between towering cliffs and a shimmering river, there was a mystery no one dared to speak about. Parskon गांव Emberfall, जो बुलंदो बाला चट्टानों और चमकते दरिया के दरमियान वाक़ था, एक ऐसा राज रखता था जिसका कोई जिक्र करने की जरअत नहीं करता था. The villagers whispered of a hidden chamber beneath the old town square, where an ancient artifact was said to be buried. गांव वाले पुरानी चौक के नीचे छुपे हुए कमरे की सरगोशियां करते थे, जहां कहा जाता था कि एक कदीम शे दफन है. Amelia, a curious and brave young woman, had always been fascinated by these stories. Amelia, एक तजस्सुस पसंद और बहादुर नौजवान लड़की, इन कहानियों से हमेशा मुतासिर रही थी. Her grandfather, once the village blacksmith, had told her tales of a glowing crystal that could control the flow of time. इसके दादा, जो कभी गांव के लोहार थे, इसे एक चमकते हुए क्रिस्टल की कहानियां सुनाते थे, जो वक्त के बहाव को काबू में रख सकता था. Many believed it was just a legend, but Amelia was determined to find the truth. बहुत से लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक अफसाना है, लेकिन एमिलिया ने मालूम करने का अज़म कर रखा था. One chilly evening, as the sun dipped behind the cliffs, Amelia found an old map tucked inside her grandfather's dusty workshop. एक सर्द शाम, जब सूरज चट्टानों के पीछे गुरूब हो रहा था, एमिलिया को अपने दादा की गर्द आलूद वर्कशॉप में एक पुराना नक्शा मिला. The map was covered in strange symbols and markings, with a route leading straight to the heart of Emberfall. नक्शे पर अजीब निशानात और अलामतें बनी हुई थीं, जो सीधा Emberfall के दिल तक का रास्ता दिखा रही थीं. Heart pounding with excitement, she decided to follow it. दल जोश से धड़क रहा था. उसने फैसला किया कि वो इस नक्शे की पैरवी करेगी. Her journey took her through narrow alleys, past forgotten statues, and into an ancient cavern hidden beneath the village. इसका सफ़र इसे तंग गलियों से लेकर भूली, बसरी मूर्तों के पास से होता हुआ गांव के नीचे छपी एक कदीम गार में ले गया. The air was thick with dust and the scent of earth. हवा धूल और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी. As she moved deeper, she noticed faint glimmers of light reflecting off the walls. जैसे जैसे वो अंदर गई, इसे दीवारों पर रोशनी की हल्की सी झलक दिखाई दी. Suddenly, Amelia heard a soft whisper echoing around her. अचानक, एमिलिया ने एक हल्की सी सरगोशी सुनी जो इर्द-गिर्द गूंज रही थी. It seemed to come from the crystal itself, urging her forward. ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ खुद क्रिस्टल से आ रही है, जो इसे आगे बढ़ने का इशारा दे रही थी. But she was not alone. लेकिन वो अकेली नहीं थी. A shadowy figure appeared, cloaked in darkness, demanding she leave at once. एक सायादार शख्सियत नमूदार हुई, जो अंधेरे में लपटी हुई थी, और उसने फौरन वहां से जाने का हुक्म दिया. Amelia's courage did not falter. Emilia का हौसला कम न हुआ. With a swift move, she dodged the figure and pressed on, following the whispering light. एक तेज हरकत से उसने इस शख्सियत को चकमा दिया और सरगोशी करती रोशनी की पैरवी करते हुए आगे बढ़ती गई. At last, she entered a large chamber where the crystal rested on a pedestal, radiating a warm glow. आखिरकार, वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुई, जहां क्रिस्टल एक सतून पर रखा था और गर्म रोशनी फैला रहा था. Reaching out, Amelia touched the crystal, feeling a surge of power course through her veins. हाथ बढ़ाकर एमिलिया ने क्रिस्टल को छुआ और उसके रगों में ताकत की लहर दौड़ गई. Time seemed to slow, and for a moment, she saw visions of the past and future intertwined. वक्त सुस्त हो गया और एक लम्हे के लिए इसे माजी और मुस्तकबिल की झलकियां एक साथ दिखाई दें. She realized that the artifact was not just a tool, but a responsibility. इसे एहसास हुआ कि ये शे सिर्फ एक आला नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है. With the crystal in her hands, Amelia knew she must protect Emberfall from those who sought to misuse its power. क्रिस्टल हाथ में लिए, एमिलिया जान गई कि इसे Emberfall को इन लोगों से बचाना होगा जो इसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं. Her adventure had only just begun,
इसकी मुहिम अभी शुरू ही हुई थी। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में। देखें आप कितना समझते हैं। मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। In the quiet village of Emberfall, nestled between towering cliffs and a shimmering river, there was a mystery no one dared to speak about. The villagers whispered of a hidden chamber beneath the old town square, where an ancient artifact was said to be buried. Amelia, a curious and brave young woman, had always been fascinated by these stories. Her grandfather, once the village blacksmith, had told her tales of a glowing crystal that could control the flow of time. Many believed it was just a legend, but Amelia was determined to find the truth. One chilly evening, as the sun dipped behind the cliffs, Amelia found an old map tucked inside her grandfather's dusty workshop. The map was covered in strange symbols and markings, with a route leading straight to the heart of Emberfall. Heart pounding with excitement, she decided to follow it. Her journey took her through narrow alleys, past forgotten statues, and into an ancient cavern hidden beneath the village. The air was thick with dust and the scent of earth. As she moved deeper, she noticed faint glimmers of light reflecting off the walls. Suddenly, Amelia heard a soft whisper echoing around her. It seemed to come from the crystal itself, urging her forward. But she was not alone. A shadowy figure appeared, cloaked in darkness, demanding she leave at once. Amelia's courage did not falter. With a swift move, she dodged the figure and pressed on, following the whispering light. At last, she entered a large chamber where the crystal rested on a pedestal, radiating a warm glow. Reaching out, Amelia touched the crystal, feeling a surge of power course through her veins. Time seemed to slow, and for a moment she saw visions of the past and future intertwined. She realized that the artifact was not just a tool, but a responsibility. With the crystal in her hands, Amelia knew she must protect Emberfall from those who sought to misuse its power. Her adventure had only just begun. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो के साथ आखिर तक रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।